वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है, दिस वीडियो इज गोइंग टू डेफिनेटली टच बैक आप लोगों का अंदर से जो भी हम लोग ये डेली की डेली गलतियां करते हैं ट्रेडिंग में, उन सारी चीजों को आपको कोरिलेट करने में हेल्प करेगा। आप लोगों को ऐसे लगेगा आई एम गोइंग टू नरेट द एंटायर स्टोरी ऑफ यू, मी और एनीबडी whosoever starts with trading and whosoever doesn't improve with the time based on whatever mistakes we do, and we don't learn from those, so we keep on continuing those mistakes, which definitely have a long term impact on our trading profits or loss. So ultimately आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। कवर करेंगे हम लोग। फर्स्ट जो हम सबसे पहले बात करेंगे दैट इज माइंडसेट वर्सेस स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन स्ट्रगल्स जो कि एक ट्रेडर्स फेस करते हैं ड्यू टू देयर इमोशनल ट्रिगर्स, and that leads to your you know uh, outcome variation. Your expected outcome and your actual outcome are varying just because of your emotional triggers. थर्ड हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से कैटालिस्ट हैं जो कि इसको एग्रीवेट करते हैं हमारे इमोशनल ट्रिगर्स को। एंड देन वी विल मूव ऑन टू व्हाट and how fear and greed dominate our decision making when it comes to trading, and what is the impact and how can we control those. Then we will take certain real life analogies where we can correlate कि अगर ऐसा होता रियल टाइम में तो हम लोग हमारी लाइफ में अगर ऐसा होता तो हम कैसे करते हैं, and how we respond or how we react accordingly. Can't we do the same thing, because life and trading are totally the same thing. अगर मेरे साथ लाइफ में 2 साल पीछे कुछ प्रॉब्लम रहा है, कुछ मेरे को स्ट्रेस रहा है, उसका रियलिस्टिक एंड लाइव जो उसका इम्पैक्ट रहा है वो मेरी ट्रेडिंग पे भी रहा है। when my times were good, when I was not having anything to bother about, I have been consistent in terms of the outcomes and the expectations of my trading. And that point in time, my life was smooth, so my returns and my consistency in my profits in trading, that was phenomenal. सो अगर हम यहाँ से, यानी कि हम अपने माइंडसेट से सही हैं और हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो सही है, तो दैट विल डेफिनेटली कीप आवर ट्रेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल. बट वंस वी आर नॉट good from here in our mindset, then how it impacts, this we are going to discuss. And then we will see the focus areas, which 5 methods can be used to overcome emotional triggers. एंड लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे कि जो भी हमारा टेक अवे होगा, कि व्हाट वी आर गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो एज अ मैसेज, एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अवर ओन ट्रेडिंग्स, दैट इज योर्स, माइंस और हूसोएवर इज लिसनिंग टू दिस वीडियो। आप इस वीडियो से क्या सीख के जाएंगे और क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट वी आर गोना कंक्लूड दैट मैसेज विद। सो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो काफी हद तक हम लोगों को पता होगा देयर इज अ पैरेटोज रूल और पैरेटोज प्रिंसिपल, right? So what it means is that is a 80-20. So it means your 80% of the times, whatever effort you are putting in the 20% of your tasks, that are going to impact. So अगर हमारा effort 80% 20% टास्क पे जा रहा है तो we will get decent returns और decent results. बट अगर हम 20% एफर्ट डालकर 80% ऐसे काम की तरफ एफर्ट डाल रहे हैं जहां पे रिजल्ट्स जो है बिल्कुल ही प्रोडक्टिव एक्सपेक्टेड ही नहीं है, तो वी आर वेस्टिंग अवर टाइम और वी आर लूजिंग ऑन दैट पार्ट. सो हेयर व्हाट आई मीन टू से इज माइंडसेट जो है, आप सबको पता है कि सब स्ट्रेटेजीज, आपको ये करना है वो करना है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो इसके ऊपर बाय करेंगे, ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो हम ब्रेकआउट करेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, ये सारी आपने जो है ये दीज आर नथिंग बट योर स्ट्रेटेजीज थिंग. तो अगर आप ये देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मैंने भी कुछ सीखा है पिछले 2 सालों में, खासकर जो गलतियां की हैं, मैंने भी डेरिवेटिव्स में भी किया है ट्रेडिंग, मैंने मतलब इम्पल्सिव ट्रेडिंग भी किया है, बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मेरे को काफी मतलब सीखने को मिला, और वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो shorten your learning curve by just going through these learnings which I'm gonna share with you here, and definitely it will reduce your learning curve. So सबसे पहले तो हमें 80% अपने माइंडसेट पे काम करना है, मतलब हमारे को ये समझना है कि हम
कौन है, व्हाट इज अवर पर्सनैलिटी, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल किस अकॉर्डिंगली होगी, दैट इज अवर पर्सनैलिटी। अगर मुझे जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग पसंद है या मैं करता हूँ, इट डजेंट मीन कि आप भी वही शुरू करेंगे और आपको भी वैसे ही रिटर्न्स या वैसा ही आउटकम मिलेगा जैसा कि मुझे मिल रहा है। सो यू हैव टू वेरी मच श्योर दैट अपार्ट फ्रॉम 20% which is the key to your outcome, that is strategies, your focus has to be basically on 80% on the mindset part, to control your emotions, not to do emotional trading, not to get aggravated by इसका रिजल्ट अभी मेरा ये प्रॉफिट हुआ है तो चलो एक दो और ट्रेड मारता हूँ, पंच करता हूँ विदाउट एनीथिंग rationally. You start just punching the orders and then whatever you have made you are giving back to the markets. This is nothing, and that again creates a spiral in your performance. Again, that will take your self confidence to a backseat. Again, that will take you into a vicious cycle of self sabotage, जहाँ पे आप हर वक्त अपने आप को ब्लेम करेंगे, अपने आप को एक हिंदी में हम जैसे बोलेंगे कोसेंगे आप, काश मैंने ये ना किया होता। बट उस टाइम पे हम लोग वो इम्प्लीमेंट जब करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं, तो वी आर टोटली थिंकिंग इम्पल्सिवली, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ रैशनल थिंकिंग, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ रैशनल रीजन, वी आर नॉट लुकिंग आउट फॉर अ लॉजिकल रीजन टू एंटर अ ट्रेड। नाउ देन कमिंग ऑन टू कॉमन स्ट्रगल्स। सो अगर आप देखेंगे तो जो ट्रिगर्स हमारे जनरेट होते हैं और उसकी वजह से हमारे जो ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट होता है, तो जो मुझे पर्सनली लगा है या जो मैंने नोट डाउन किया अपने लिए over the period of time and after talking to multiple traders on different forums. So they have basically boiled down to three or four areas. So first is FOMO में, right? Fear of missing out. कोई भी एक चीज कंटिन्यूअसली ऊपर 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 जा रही है तो हमें ये लगता है कि हमने फर्स्ट स्टेप पे मिस किया, सेकंड पे मिस किया, थर्ड पे मिस किया। तो अब फाइनली तो मेरे से बहुत सारा ट्रेंडिंग स्टॉक या इंडेक्स छूट चुका है, राइट? बट मैं वो बोलूंगा कि भागते चोर की लंगोटी सही, राइट? तब मैं एंट्री करूंगा जब ट्रेंड बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट टेकिंग द प्रॉफिट्स, एंड देन वी विल बी द पर्सन हु विल बी लास्ट इन द म्यूजिकल चेयर टू होल्ड ऑन आवर पोजीशंस। तो रॉन्ग एंट्री बोलेंगे आप फोमो की वजह से। सेकेंड थिंग विल बी योर रिवेंज ट्रेडिंग, अगेन दैट विल कम इनटू पिक्चर। आपने अच्छा एक ट्रेड लिया, उसमें आपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, आपको लगा कि नहीं और करना चाहिए और करना चाहिए, वो ग्रीड दिया, राइट? ग्रीड आया, एंड ड्यू टू दैट ग्रीड पार्ट what you happen is you will be not booking your profits. Once the trend starts even reversing, then either if at all you are not trailing it with a proper mechanism at your place, if you don't have any proven strategy, if you don't have any plan to execute accordingly, then definitely you will be so much worried. आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपको कब एग्जिट करना है, कैसे एग्जिट करना है, आपका कोई प्लान नहीं है। आपने रैंडमली एक ट्रेड लिया, आपने उसके अंदर घुसे, आपको कोई आपका प्लान नहीं है, यू डोंट नो हाउ यू हैव टेकन दिस, व्हाट फॉर यू हैव टेकन दिस, एंड यू जस्ट आइदर सॉ समबडी टेकिंग अ ट्रेड ऑन दैट प्लान, और आइदर आपने कहीं ना कहीं एक रैंडम देखा, आज सुबह 9:15 पे ओपन हुआ मार्केट, कुछ तो करना है मुझे, राइट? विद दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट अगेन you definitely will indulge into these kind of a revenge trades. मेरा लॉस हुआ है, चलो आज का मेरे को ये लॉस हुआ है, तो यू विल नॉट थिंक अबाउट द लॉजिक फॉर व्हाट दिस लॉस हैज occurred to you. If at all it is as per your plan, you should be more than happy that you have taken a loss and you have come out of that trade. But if you have not gone through the execution of this trade according to your plan, then definitely it's a strict no. You should strictly avoid going through these kind of trades. Finally, one more category into this will be your over trading again. एक बार ही किया, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, चलो ठीक है अभी और कर लेता हूँ, प्रॉफिट हुआ तो मैं और थोड़ा बढ़ा के ले लेता हूँ आज, लॉस हो गया तो चलो ठीक है अभी मेरे को वो बस उतना ही अमाउंट जितना मेरा लॉस गया है, दैट इफ एट ऑल आई गेट compensated, I will be quitting, and that never happens. I have been through that vicious circle myself. So I'm telling you straight from the heart, whatever I have gone through or whatever I have experienced it from others traders talk, these are the basic emotional triggers which lead out to our emotional outburst. We get so impulsive, we don't have any rational thinking to enter into a trade or exit into a trade because we are not following any plan. We are just going random by our own instincts or hearing it from here and there. And finally, what happens, the worst part of it is it shatters your confidence. You start
questioning your self, knowledge or awareness, and you start doubting your own capabilities. Am I suitable for trading? Am I doing the right thing? But at the same time, you're not thinking these kind of questions at the mindset level. Before you plan even a trade, what is your entry criteria? What is your exit criteria? These all things are taking a back seat at that point in time. अभी लेना है, अभी लेना है, अभी लेना है, नहीं तो मेरा पैसा चला जाएगा. उसने इतना प्रॉफिट बनाया, मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है. This kind of things which are prevailing in our mind gave us this kind of a lack of awareness and lack of proper plan to execute, due to which we are either going to lose our confidence within our capabilities and within ourselves. At the same time, it might lead to overconfidence. अगर मुझे दो ट्रेड कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल मिल गया, राइट, बट मैं अपन ही बॉस है करके वो वाला फील आता है, राइट, कि मुझे मार्केट समझ आ गया, मार्केट आई नो एवरीथिंग, आई विल गो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर I think, where Mr. Teacher market will come into play and slap you hard and then make you humble and bring you to the ground. So these are the common triggers which I have witnessed personally or either heard from most of the traders. And then once it comes to that, how emotions take over our decision making. So we are not in a good state of mind once we are highly emoted. We are charged up, either in negative terms or either in a positive terms. Profit means positive for us being a trader, and negative means if at all we are, taking certain losses at home. So what I mean by that is that basically what, as a human being, we have this tendency to जस्ट गो इन टू दैट विशियस सर्कल के लॉस हो रहा है तो मुझे जब तक एक बारी प्रॉफिट आ जाए, जब तक मेरा ब्रेक इवन नहीं होगा, तब तक मैं उस चीज को करता जाऊं, तब तक मैं वो ट्रेड ले लूं. दैट लीड्स अस टू अ रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग. Very thin line between those two. And at the same time, these all are just caused due to our poor judgment, because we are ignoring our trading plan. We don't have a trading plan at first place. इट्स जस्ट बिकॉज कि हमें कुछ करना है. एक्शन, डोपामिन रश, एड्रेनलिन रश जिसे हम बोलेंगे, कुछ करना है करके मुझे जाना है और मुझे पैसा चाहिए मार्केट से. when we come with this kind of a mindset, we are not going to succeed and sustain for long duration in the markets. This is what is normally a gamble, where we don't have any plan, we don't have done any research of our own, we are just going by somebody's words and हम लोग वही एग्जीक्यूट करने पे चले जाते हैं बिना देखे. हम क्या गाड़ी जब चलाते हैं तो क्या हम लोग बिना रोड देखे चलाते हैं गाड़ी? ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट. वी डोंट गो ब्लाइंड ओवर देयर, बट वी गो ब्लाइंड ओवर हियर. यहाँ हमारे हाथ में ऐसा लगता है घर में बैठे हैं, लैपटॉप है, ट्रेडिंग टर्मिनल है, ब्रोकर के टर्मिनल पे ऑर्डर पंच किया, अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, राइट. वी गो ब्लाइंड. And after that loss, we get into these emotional triggers, again into a loop. Over trading, revenge trading, FOMO, and all sort of these things. Second other major reason for this emotional triggers is high risk exposure. We don't have any appropriate risk management in place. We don't know our stop loss. We don't know our exit uh, criteria. ओनली थिंग इज, जहां पे भी मिल रहा है, जब भी मिल रहा है, चढ़ जाओ. वो गाड़ी कहाँ रुकेगी, हमें उस डेस्टिनेशन पे कहाँ उतरना है, हमें कुछ नहीं आइडिया. वी स्टार्ट बोर्डिंग द ट्रेन विदाउट एनी अवेयरनेस ऑन दोज पैरामीटर्स. एंड फाइनली, जो मैंने पहले भी बोला है, जैसे कॉन्फिडेंस का शैटर होना, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट एंड फियर while you are going to punch your next trade, even thinking rationally, even thinking logically, even if at all you have created your own trading plan, still not you will be able to execute it thoroughly without any fear. And I have experienced all those sort of things. These are coming straight from my live experiences as well. So take care of these things and note it down. So coming on to the next thing is how we can control these emotional triggers. We all are humans. We can't control our emotions, but at the same time, we need to draw a thin line that things which are not working and which are going for a repeated toss,
We should try to remove them from our day-to-day action or implementation plans. So first thing is we need to pause before acting. अगर आपका एक लॉस हुआ है या अगर आपके तीन चार प्रॉफिट इकट्ठे हो गए तो स्लो डाउन योर स्पीड. Don't be in a same state of mind when you are doing it going for the first trade एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फिफ्थ ट्रेड. अगर आपके लॉस हुआ है तो उसके बाद में एनालाइज कीजिए अपने लॉस को, ट्रेडिंग जर्नल में डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए कि व्हाई दिस हैपेंड, इट वाज इट एज पर द प्लान, market breadth was not supportive or volatility was there or some event was there, why this happened. This will keep you you know aware of your own wrongdoings, जहां आप गलती कर रहे हैं वो आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है. देन ओनली यू कैन इम्प्रूव दोस. अगर आपने कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया आपको याद नहीं रहेगा तीसरे चौथे दिन, हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद कि आपने क्या किया था. एंड देन यू आर गोइंग टू रिपीट दैट सेम मिस्टेक maybe after 1 month, maybe after 2 months and all that, which is again going to keep you in this loop of emotional triggers. Second thing है, स्टिक टू अ प्लान. प्लान बनाइए अपने खुद के एंट्री क्राइटेरियाज, एग्जिट क्राइटेरियाज, आपका किस इंडेक्स को आपने ट्रेड करना है या किस स्टॉक, किस टाइप के स्टॉक्स को आप ट्रेड करेंगे. आइदर यू आर अ मीन रिवर्जन ट्रेडर, आइदर यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर, either you are a swing trader. What kind of trading you are comfortable with, what kind of research you do before entering into a trade, which kind of a time frame you rely upon. These all will come into a trading plan. Then, as I said earlier, journal your trades, whether it is a positive or a negative trade. What worked for you, you have to document that. What didn't work out for you, you should try to avoid that in going forward in your execution plan. That helps you also for a review as well, so that you can leave out the things which are not working and you can make sure that you work on those areas only which are doing good for you. Then is step back after losses. Again, you need to take a pause. लॉसेस के बाद खासकर आपको वो मोमेंटम बिल्ड नहीं करना कि अभी एक लिया, अभी दूसरा ट्रेड किया, अभी तीसरा किया, अभी किसी का सुना, अभी किसी ने पोस्ट करा कि आज ये वाला ब्रेकआउट हो रहा है एंड ऑल दैट. You just only need to take inputs from anywhere. You do need to have your own analysis, your own research, your own thought process, your own rational, your own logic. Why this is going to happen this way, the way which somebody is telling you. Nobody knows it beforehand. Everybody can talk about these later on. बट जो चार्ट पे दिख रहा है या जो भी आपका फंडामेंटल एनालिसिस या जिस भी पैरामीटर के बेसिस पे आपने वो डिसीजन लिया है, go for it and take that accountability, whether it goes right or wrong. You cannot have a control on your outcome of the trade. You only have the control on the variables which you can control. And most of them are you related only. So अपने आप को चेंज करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियां की हैं, क्या ताकि हम लोग उसे रिव्यू करके इम्प्रूव कर सकें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन प्रोग्रेस. Go for small, consistent steps rather than being one trade very good and losing in a streak. So आइए इससे पहले कि मैं आपको अब ये theoretical लगे, I just want to share it on the screen with you. Let me take you to the screen and show you certain examples. Give me a moment. Let's go to the charts. I will show you certain names which were once upon a time डार्लिंग ऑफ मार्केट्स. और ये मैंने कल और आज दोनों दिन अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया है, राइट. सो आई विल शो यू सर्टेन दोज लाइव एग्जांपल्स बिफोर योर आइज, जो आपको कोरिलेट करने में हेल्प करेंगे व्हाट एवर वी डिस्कस्ड. फॉर एग्जांपल अनंत राज, और this was a kind of a data center play which everybody was talking about, even after having a slight sort of confusion whether it is Tark from the same business group or whether it is Anant Raj, which was supposed to be a data center company when everybody was talking about
data centers and their utility and their upcoming future in Indian markets and globally as well. So see, this is the kind of thing. If at all you are seeing since here, this stock has been continuously making higher highs and higher lows. And this black line which you are seeing is 21 period moving average on a daily time frame. So it is directly going for now, we can say it for months in a rising channel. And this was the first alarm bell. This was a kind of resistance turned support. And if you see here, this is a M pattern or a double top pattern, M pattern, this. And this was a retest of the breakout area. This was broken down parallelly to 21 period moving average, which till now was acting as a support, turned out to be a resistance. अब यहाँ पे तीन तीन चीजें एक साथ में हो रही है और उसके बाद भी अगर हम लोग होप में बैठे हैं, राइट, कि हमारा जो है स्टॉक अभी चलेगा, अभी मुझे एंट्री करने के बाद ये भी नहीं पता कि मुझे एग्जिट क्यों लेना है, कहाँ लेना है, किसी ने बोला, मैंने कहीं पे भी एंट्री कर दी इस राइजिंग चैनल पे, वहां से मैंने पैसा कमाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके एंटर कर रहा हूँ टॉप पे और वो पैटर्न मैंने देखा कि ये फर्स्ट, यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा कि दिस इज अ फर्स्ट, इवन नॉट अ लोअर लो, ऑल्सो हायर लो ही है, बट यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिला कि इससे हायर हाई नहीं बना, यहाँ पे एक फर्स्ट लोअर हाई बना। उस लोअर हाई के बाद देन अगेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग लोअर लोस। ये नेकलाइन ब्रेक हुआ यहाँ पे एम पैटर्न का, एंड आफ्टर दैट ये सपोर्ट भी ब्रेक हुआ, जो रीटेस्ट होने के बाद एक्चुअली आइडियली इट शुड हैव एक्टेड एज अ सपोर्ट, बट ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया। चैनल का भी ब्रेकडाउन हुआ, 21 पीरियड मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस लिया, all these things, and see the volumes also. These volumes also were picking up slowly and gradually. All these were collective indication or clue that यहाँ से एंट्री जो भी लिया हो, जहां पे भी लिया हो इस चैनल के दौरान, वहां से आपको एग्जिट लेना अभी जरूरी है। सेम goes for all those power related stocks, and all these were darling once upon a time, just couple of months back only. So यहाँ पे आपको अपना इमोशंस पे कंट्रोल करना है कि ग्रीडी वहां पे नहीं होना जब मार्केट्स पूरा क्रैकडाउन कर रहा है और आप ग्रीडी हो रहे हो अपने प्रॉफिट्स को लेके या अपने लॉस को बुक करने के लिए। आपको दिख रहा है आपने लेट एंट्री किया, आपको फर्स्ट सिग्नल पे अगर आपको लॉस भी हुआ है, अगर आपको 10% लॉस हुआ, वो लेके निकल जाना चाहिए रेदर देन वेटिंग फॉर गेटिंग इट amplified to say 30%, 50%. And this can happen in a quick time as well. So यहाँ पे भी यही एग्जांपल है। If you see Power India, the same story I repeated earlier. Hence, I'm just showing you certain examples on charts so that you can correlate what I was talking about and how we can mitigate the risk just by controlling our emotions. But don't get engaged into impulsive trading or a random trade where you don't understand why you are entering, what place you will take a stop loss, what point you will exit. Same all story. See the volumes. These are all EMS. This is a EMS category story where everybody was running after this theme as well. I am not saying that, see, fundamentally, they definitely might have certain good stories to be played. What is clearly visible on charts is we can re-enter if at all the structure of the chart starts improving. But at this point in time, whether you are a swing trader, whether you are a positional trader, whether you are a long-term investor even, at once you should be either exiting or you should not even start doing a pyramiding at this point for sure. Let the structure show you certain signs of early revival. Then only you should start riding the trend again. So this is what I wanted to share with you guys, and hopefully this made a lot of sense to you. If at all you resonate with whatever I have shared today, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों के क्या इमोशनल ट्रिगर्स रहते हैं, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो।
आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं इमोशनली डिसीजन मेकिंग करके, जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग में या तो बहुत लॉसेस हुए हैं, और अगर प्रॉफिट हुए तो ग्रीड वगैरह की वजह से आपने उन प्रॉफिट्स को राइड नहीं किया, एंड फाइनली यू हैव आइदर क्लोज द ट्रेड एट ब्रेक इवन, और even taking the loss after seeing the profit. So let's share it over your learnings in the comments. I will read it personally and I will respond to each one of you. If at all you are new to this channel, just do subscribe it and click the bell icon so that you can be notified going forward for all the new videos. We will have videos on Wednesdays, Fridays, and Saturdays after 8 p.m. So thanks for watching. Take care. Good night.